and the eligibility is only 10 plus 2 pass. The medium of instruction for this program is English. The minimum duration of this program is 1 year and maximum duration is 3 years. The admissions are open for this program for both January and July cycles. This program will specifically train you to become creative and leverage your expertise right from the process of transformation from event studies to practice. So welcome to the field of event management, and I'm sure you'll not miss this opportunity to learn about event management and get into the wonderful world of events. Hurry up and enroll now. नमस्कार, गुड आफ्टरनून दर्शकों, आप सभी का रीजनल सर्विसेज डिवीजन के स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मधु प्रहार मैम, डायरेक्टर COE, और इनके अलावा हैं डॉक्टर अवधिया जी। तो मैं एक बार जो है आग्रह करूंगा मैडम से कि आप अपने बारे में मैम थोड़ा बहुत बताएं, और थोड़ा आशीष जी। Dear students who are at the various regional centers or study centers of Indira Gandhi National Open University, आप सबका इस रीजनल सर्विसेज डिवीजन का 1 घंटे का जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेशन है, आप सबका स्वागत इस सेशन में। आप सब अलग अलग प्रोग्राम्स से अटैच्ड होंगे। आपने अलग अलग प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया होगा और आज आप हमको सुनने के लिए यहाँ पे आज आए। मैं प्रोफेसर मधु प्रहार, सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हूँ। सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे कि नाम से ही ज्ञात होगा कि ये ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काम करता है। सो सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑफरिंग 44 ऑनलाइन कोर्सेज। वी आर वर्किंग ऑन स्वयं एंड स्वयं प्रभा। वी आर वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट्स which are by Government of India, Ministry of External Affairs, as well as we are giving online courses to the Government of Guyana. तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे काम है। मैं स्ट्राइड में हूँ, पर मैं यहाँ पे सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में डायरेक्टर हूँ। तो आशीष जी भी COE में ही है, सेंटर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो आशीष जी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, स्वयं प्रभा चैनल्स पे भी इनका प्रोग्राम है, मूक्स भी बहुत सारा लॉन्च किए हुए हैं। तो आपसे भी जान लेते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में। धन्यवाद सर एंड प्रोफेसर प्रहार। और मेरा नाम है आशीष कुमार अवधिया और मैं सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ।
So, learners, as you are aware that our government of India has initiated Swayam as a digital initiative of in India, basically for bridging the digital divide and giving very high quality education to our learners. And there are many national coordinators of Swayam in India. One of them is Indira Gandhi National Open University, and the Swayam project is hosted at Center for Online Education, and we as a national coordinator, we are offering Swayam courses through Ignou Swayam. So there are many courses. We will tell you what are the different courses, what are the different disciplines, what benefits you can take from Swayam, how you can take credit transfer, all those things we will be discussing. तो जैसा कि आशीष जी मैम ने अभी बताया कि 44 प्रोग्राम्स आप लोगों के हैं जो ऑनलाइन माध्यम से जिसमें स्टूडेंट जो है इनरोल्ड हो सकता है। तो उसमें से मेरे पास एक लिस्ट है। इसमें मास्टर्स में 12 प्रोग्राम्स हैं और बैचलर डिग्री में 5 प्रोग्राम्स हैं, पीजी डिप्लोमा में 11 प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेट में 15 प्रोग्राम्स हैं। तो इनके बारे में, इन प्रोग्राम्स के बारे में अगर कुछ डिटेल्स यहाँ पे हो तो कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या उस पे शो कर रहे हैं? वो तो स्वयं के हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में तो थोड़ा सा हमने बता दिया कि हमारे पास 44 प्रोग्राम्स हैं जो वेरियस लेवल्स पे हैं, जैसे ग्रेजुएशन पे है, पोस्ट ग्रेजुएशन पे है, सर्टिफिकेट पे है, डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है। पर आज हम आपसे मैं थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे। एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो, हाँ, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। हाँ 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 जी, मैं सर ये पूछना चाहती, क्या इग्नू एनईपी के थ्रू एडमिशन लेता है क्या, होता है क्या? किसके थ्रू? एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। जैसे बच्चे हाँ। किसी कॉलेज से 1.5 साल 1 साल ग्रेजुएशन किया, फिर वो किसी वजह से स्विच करना चाह रहा है यूनिवर्सिटी, तो क्या पॉसिबल है क्या? देखिए, एनईपी की आपने बात की। एनईपी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसके थ्रू कोई एडमिशन नहीं होता। पर इग्नो एडमिशन देता है, जो हम आगे बात करेंगे, जो आप शायद प्रश्न पूछना चाहती हैं कि क्रेडिट ट्रांसफर की, कि जैसे आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने कोई कोर्सेज लिए, क्या इग्नो आपको क्रेडिट ट्रांसफर करेगा, या इग्नो से अगर आपने कोई कोर्स ले लिया तो आपके उस क्रेडिट में आपके वो कोर्स आएगा। मेरा ख्याल आपका मतलब यही था। नेशनल एजुकेशन तो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ना, उसमें ये बात लिखी गई है। पर वो एनईपी डॉक्यूमेंट है, पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी क्रेडिट ट्रांसफर की पॉलिसी को उसने अडॉप्ट कर लिया है। और अभी जहां तक मैं भी प्रश्न आपका समझ रहा हूं, तो जो भी आप जो है अपने एग्जाम के थ्रू प्राप्त करेंगी किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो अभी वो सिस्टम जो है हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ है, अडॉप्ट नहीं किया गया है। अभी उस पे जो है काम चल रहा है कि जो भी आप कोर्स कंप्लीट अपना कर लेती हैं, अगर हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में आती हैं, तो वो क्रेडिट ट्रांसफर उस पे अभी काम चल रहा है। मतलब सर, जैसे मैं यहाँ लखनऊ में एक शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है, उसमें बैचलर ऑफ ग्रेजुएशन विजुअल आर्ट्स का इन्होंने कोर्स किया, 1.5 साल इन्होंने पढ़ाई की, और अब वो उसमें से स्विच करके दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो क्या उसका 1-1.5 साल बच सकता है क्या? मेरा नहीं, अब यही पूछना चाह। अभी ये सिस्टम हमारे यहाँ अडॉप्ट नहीं हुआ है। इवन अभी किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी अडॉप्ट नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ, हमको उस विश्वविद्यालय की जो पॉलिसी अभी नहीं पता, जिस आप विश्वविद्यालय की आप बात कर रही हैं, तो आप अगर वहाँ पे जाके पता करेंगी तो बेहतर होगा। हाँ, वो तो मैं पता कर लूंगी। मैं इग्नू में बच्चे का करवाना चाह रही हूँ ना, तो मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा क्या, मैं ये पता कर रही हूँ। मैं नहीं, पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो लिखा है और हम उस पे काम भी कर रहे हैं। तो स्वयं पे अभी जब हम आगे बताएंगे आपको कि स्वयं के जो कोर्सेज हैं उसमें हमारा ये क्रेडिट ट्रांसफर है। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे 44 प्रोग्राम्स जो ही करता है, और वो वेरियस लेवल्स पे हैं। पर आज हम जो बात करेंगे आपसे वो है स्वयं के कोर्सेज के बारे में। अब जैसे कि डॉक्टर आशीष ने कहा
कि भारत सरकार ने, आपने देखा होगा, हर क्षेत्र में बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, और खाली शिक्षा में ही नहीं है, आपका कृषि में है, आपका उद्योग में है। मैम फिर से रोकना चाहेंगे, कोई और कॉलर हमसे जुड़े हुए। हेलो, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, लगता है अभी कनेक्शन नहीं हुआ, पर हम इस आगे अपना जो डिस्कशन है, वी विल कंटिन्यू दैट। सो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे कि डिजिटल इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने बहुत शुरू किए हैं। हम आते हैं कि शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किए, जिसमें से अगर हम कुछ का नाम लें, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, वर्चुअल लैब्स है, हमारा NDLI है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, पाठशाला है, और शोध गंगा है, बहुत सारे हैं। अगर आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे देखेंगे। 2023 में मैंने पेपर दिया था, जिनका 4 कोर्सेज का रिजल्ट आ चुका है। तो मुझे एक कोर्स के लिए रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, तो मैं कब तक अप्लाई कर सकता हूँ, जिनका रिजल्ट आज निकला है? और दूसरा ये क्वेश्चन है, असाइनमेंट का मार्क्स कब पता चलेगा, ताकि मैं बाकी कोर्स में अप्लाई करना है या नहीं, ये मैं समझ सकूं कि मतलब उस पर रिवैल्यूएशन अप्लाई करना है कि नहीं, मैं डिसाइड कर सकूं। देखिए, रिवैल्यूएशन जहाँ तक प्रश्न है, तो आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ रूल रेगुलेशन दिया हुआ है। रिजल्ट आउट होने के विद इन 1 मंथ आपको जो है अप्लाई करना होता है, तो आप वो जो है अप्लाई कर दीजिए। और रही असाइनमेंट अवार्ड्स की बात, अगर आप जो है अपने रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जाएंगे तो वहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा स्टूडेंट ये असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस, जिसको क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं कि इस सेशन के लिए आपका असाइनमेंट्स अवार्ड्स रीजनल सेंटर पे सबमिट हुआ है या नहीं। और अगर जो है उस पे नहीं आपको पता चल पा रहा है, तो आप जो है थ्रू iGram, जो हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके माध्यम से भी इग्नू के आप जो है अपनी क्वेरी अपने रीजनल सेंटर पे डाल सकते हैं। तो असाइनमेंट अवार्ड्स के बारे में या असाइनमेंट से रिलेटेड आपको जो है जानकारी आपके रीजनल सेंटर से मिल जाएगी, और रिजल्ट और प्लस जो है री इवेल्युएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, उस पर गाइडलाइंस दी हुई है। हेलो, तो हम चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किए। तो उसमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सारे महत्वपूर्ण है, पर जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो है स्वयं। अब स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जो 2016 में द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड दैट, और उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के छोटे छोटे कोर्सेज हैं, जिनको हम मूक्स कहते हैं, MOOC। मूक्स का मतलब हुआ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इस प्लेटफॉर्म पे विभिन्न विश्वविद्यालयों के बहुत सारे कोर्सेज हैं। 9 इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपने कोर्सेज इसके ऊपर, स्वयं के ऊपर डाले हैं, और ये सब ऑनलाइन हैं। जिसमें से एक जो नेशनल कोऑर्डिनेटर, जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, उसमें से एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। हम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स को हमने स्वयं पे डाला। खाली सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा ही नहीं डाला, पर हमारे पास ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं। अब ये सब जो है ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, पर स्वयं प्लेटफॉर्म पे है। ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म हम आपको अभी दिखाएंगे कि कैसे आप स्वयं प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। पर जब हमने शुरू किया था हमारे विश्वविद्यालय ने, तब हमने सिर्फ 11 या 12 कोर्सेज से शुरू किया। पर उसके बाद कोविड के दौरान हमने काफी प्रोग्राम्स या काफी कोर्सेज हमने लॉन्च किए, और इस टाइम
at present, we have more than 200 SWAYAM programs on the SWAYAM platform. तो ये तो एक बात थी. क्यों ये किया गया, भारत सरकार ने क्यों शुरू किया? तो बेसिकली 3 कारण थे. एक तो हायर एजुकेशन में जैसे आपने सुना हो कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक्सेस, इक्विटी और तीसरा है क्वालिटी. एक्सेस मीन्स सबको पढ़ाई का मौका या पढ़ाई मिले, तो दूसरा इक्विटी, मौका मिले, तीसरा की क्वालिटी एजुकेशन हम सबको मिले. यही शिक्षा नीति में लिखा गया है और यही भारत सरकार की महत्वता है इस वक्त. और दूसरा कारण ये है कि स्वयं के कोर्सेज को, कि हमको उसको जो डिजिटल डिवाइड है इस टाइम कंट्री में, आपने देखा होगा रूरल एरियाज में, गांव में अभी भी इंटरनेट नहीं है ना. हमारे शहर में, दिल्ली में हो, मुंबई में हो या चेन्नई में हो, ऐसी जगह पे तो काफी इंटरनेट की सुविधा है. पर जब हम गांव में जाते हैं, रूरल एरियाज में जाते हैं, इंटीरियर्स में जाते हैं, वहां पे अभी इतनी सुविधा नहीं है. पर हाँ, मोबाइल है वहां पे. तो हम कैसे ये जो स्वयं के कोर्सेज हैं अपने मोबाइल के द्वारा भी हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें हम एडमिशन ले सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि आप अभी दिखाएंगे भी कि स्वयं पे कैसे आपने रजिस्टर करना है और कैसे आपने उसको अपना कोर्स लेना है. फायदा क्या है थोड़ी सी हम बात कर लें, फिर हम आपको दिखा देंगे कि भी कैसे करना है. सबसे बड़ा फायदा तो ये है, इसका 2-3 फायदे हैं. सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला, शिक्षा मंत्रालय ने नोटिफिकेशन निकाला, हमारी पॉलिसी ने ये लिखा गया कि आप क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसे लखनऊ से किसी ने अभी बात की थी कि एक विश्वविद्यालय में अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लखनऊ में हूँ, मैं दिल्ली आ गई हूँ या मैं पंजाब में किसी जगह चली गई हूँ, तो क्या मैं अपना तबादला और क्रेडिट को एक्यूमुलेट कर सकती हूँ जितना मैंने पढ़ाई की? बिल्कुल, आप सब कर सकते हैं. तो स्वयं में सबसे बड़ी जो खास बात यह है इन कोर्सेज की कि आप कोर्सेज लीजिए. आप अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं उदाहरण के लिए, तो आप स्वयं की 40% अगर आपने कोर्सेज लिए हैं वो आप उसमें क्रेडिट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं. और जो यूजीसी के नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि any student can take 40% of the credits from any other place or from स्वयं. तो सबसे ज्यादा फायदा तो इसका है. दूसरा फायदा जो ये है कि हमारे जो स्वयं पे कोर्सेज हैं, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं, वो विभिन्न डिसिप्लिन्स के हैं. अगर हम कुछ आपको बताएं कि कौन से डिसिप्लिन्स में ये है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन. जैसे एग्रीकल्चर में है, लॉ में है, एजुकेशन में है, मैनेजमेंट में है, एनवायरमेंटल साइंसेज में है, इंजीनियरिंग में है. तो हमने विभिन्न डिसिप्लिन्स में अपने कोर्सेज जो वो बनाए हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन के हैं वो, और आप उनको क्रेडिट लेके आप उसको अपने मेन क्रेडिट में आप उसको ऐड करके आपको उसका फायदा मिल सकता है. तो मैं अब डॉक्टर आशीष को कहूंगी कि थोड़ा सा आपको अगर वो स्वयं प्लेटफॉर्म पोर्टल का अगर आपको होम पेज दिखा दें तो आपको पता चलेगा कि कैसे उसके अंदर उसको एक्सेस करना है. Viewers, abhi we will move to the Swayam portal ki how we will see Swayam portal, how can register into Swayam portal, how can browse the courses, how can access the courses, those things we will see. Before going to that Swayam portal, I would like to tell you that the Swayam courses are offered with an innovative pedagogy. Hello. हेलो, हाँ, अपना प्रश्न पूछिए. हेलो, आपकी आवाज नहीं आई. हाँ सर, बोलिए सर. नहीं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
चलो हम आगे आपका प्रश्न। तो लगता है कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मैं बताता हूँ इनोवेटिव जो पेडागोजी स्वयं में यूज होती है. सो स्वयं कोर्सेज आर डिलीवर्ड थ्रू डिफरेंट पेडागोजी इन विच we actually use 4 quadrant. In quadrant 1 there are videos, animation, simulations that is used for delivering the content. Then in quadrant 2 we use text. E-text is self-learning material as well as. हेलो. हाँ सर. हाँ पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? सर मेरा सर रिजल्ट नहीं पहुंचा है. रिजल्ट आप पास कर चुके हैं? जी सर. किस सत्र में पास किया आपने? 2022 में सर. 2022 क्या दिसंबर या? नंबर सर. हेलो सर अथी असाइनमेंट का नंबर नहीं चढ़ा था, लेकिन फिर सर यहाँ से भेज दिया गया कॉलेज से, लेकिन वहाँ से नहीं आया रिजल्ट. नहीं तो आपने अपना चेक किया है असाइनमेंट का अवार्ड गया कि नहीं? चला गया है. कब गया है? सर कब चला गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं पहुंचा है सर. थोड़ा चेक कीजिए ना. नहीं, आप अपना इनरोलमेंट बताएंगे? जी सर. बताइए. एक मिनट सर. आपको याद है एनरोलमेंट नंबर अपना? 21076. हाँ 21076 38648. हाँ. किस प्रोग्राम में था आपका एडमिशन? पीजीडीआरडी. बीडीपी? पीजीडीआरसी. पीजीडीआरडी. अच्छा, पीजीडीआरडी. रूरल डेवलपमेंट में आपने किया? क्या सर? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट. जी सर, रूरल डेवलपमेंट. तो कहाँ आपका सेंटर कहाँ था? सेंटर था सर सासाराम में. सासाराम में. अच्छा, तो एक बार आप बिहार. नहीं, एक बार अपना ग्रेड कार्ड आपने अपना चेक किया है? ग्रेड कार्ड में पूरा टोटल कंप्लीटेड शो कर रहा है? जी सर. ठीक है, ये हम लोग जो है चेक करवा लेंगे. वैसे अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है ना, तो आप जो है उस पे भी igram पे डाल सकते हैं. igram हमारा, अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ सर्च करेंगे, इग्नू का ग्रीवांस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पे आप रजिस्टर होके अपनी क्वेरी जो है डाल दीजिए, जो भी आपकी ग्रीवांस है. विद इन वीक आपको जो है रिस्पांस मिल जाएगा. अगर आपका रिजल्ट है तो आपको जो है भेज दिया जाएगा. यहाँ से भेजा गया होगा. जनरली होता यह है कि जब भी आपका रिजल्ट कंप्लीट होता है, इमीडिएट आपका ग्रेड कार्ड और उसके साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है, जो आपने दिया हुआ था पहले उसमें एडमिशन के टाइम पे. और अगर वो रिटर्न आता है तभी आपको नहीं मिल पाता है, या आपने एड्रेस अपना चेंज किया होगा, उसी कंडीशन में वो हमारे पास रिटर्न आता है. अदरवाइज जो है पोस्ट ऑफिस से पता किया था आपने? जी सर, नहीं पहुंचा सर. बहुत दिन, 1 साल समझिए होने जा रहे हैं सर. लोगों नहीं को तो आ गया सर. अभी तो आप कह रहे हैं कि अभी चढ़ा था कॉलेज वाला, तो फिर चढ़ा के यहाँ से भेज दिया, लेकिन नहीं, सर वहाँ अभी से आना चाहिए ना. अभी तो आप कह रहे हैं कि अभी आपका रिजल्ट कुछ दिन पहले ही असाइनमेंट का गया है. अगर रिजल्ट तब तक कंप्लीट नहीं होता है, अगर उसका कोई भी कंपोनेंट, चाहे असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल हो, प्रोजेक्ट हो, कोई भी कंपोनेंट अगर आपके प्रोग्राम में रह जाता है, तब तक आपका रिजल्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा. तब तक आपका जो है ग्रेड कार्ड नहीं आउट होगा. तो अभी आपका चूंकि बता रहे हैं कि असाइनमेंट का अवार्ड भेजा जा चुका है, हम इसको चेक कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको जो है एसईडी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास इमीडिएट चला जाए. ठीक है, चलिए. तो इस तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों के. जनरली होता ये है कि एड्रेस चेंज कर लेते हैं बच्चे, फ्रीक्वेंट जो हमारे लर्नर्स हैं, तो उसी कंडीशन में ये चीजें आती हैं, फेस करते हैं हम लोग. अभी हम लोग बात कर रहे थे स्वयं, तो स्वयं के क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे थे. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाज वीडियोस, एनिमेशन, सिमुलेशन. सेकंड क्वाड्रेंट वाज ई टेक्स्ट, ई कंटेंट, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज. हेलो, हाँ बोलिए. हेलो, आप अपना प्रश्न पूछिए. हेलो. हाँ हाँ, हेलो, आपकी आवाज आ रही है.
हेलो हेलो, हेलो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो हाँ, आप अपना प्रश्न पूछिए, आपकी आवाज आ रही है हम लोगों को। हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? तो आई थिंक कनेक्शन चला गया है। सो अब दो क्वाड्रेंट तो हम बता चुके हैं। द थर्ड क्वाड्रेंट इज डिस्कशन फोरम एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज असेसमेंट। सो दीज आर द फोर क्वाड्रेंट अंडर विच द स्वयं कोर्सेज आशीष जी आर थोड़ा सा डिलीवर्ड। रोकना चाहेंगे? हाँ, हेलो, कॉलर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं पटना से। हेलो, नहीं लग रहा, फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए, सो अब हम वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि कैसे स्वयं के कोर्सेज पे रजिस्टर किया जा सकता है और कैसे कोर्सेज को सर्च किया जा सकता है। सो इसके लिए आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पर जाना है और ब्राउजर पर जाकर आपको टाइप करना है swayam.gov.in। swayam.gov.in ये स्वयं की वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और यदि आप देख रहे होंगे तो ये स्वयं का होम पेज है। जब हमने स्वयं पर swayam.gov.in करके डाला, ये स्वयं का होम पेज है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले साइन इन और रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आप जाकर यदि उस रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर जाकर वो साइन अप कर सकता है। बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ मांगता है साइन अप करने के लिए, यूज़र नेम, पासवर्ड, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसा छोटे छोटे डिटेल्स देकर आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार आप रजिस्टर आपने एक बार रजिस्टर कर लिया तो उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से आप यूज़ करके स्वयं की वेबसाइट पर एंटर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वयं के वेबसाइट पर आप जाकर अलग अलग तरह के कोर्स कैसे देख सकते हैं। तो यदि आप देखेंगे कि अबाउट स्वयं, ऑल कोर्सेज, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, सो मैं इग्नू के कोर्सेज की तरफ आपका ध्यान लेना चाहूँगा। तो इग्नू में आप जब क्लिक करेंगे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर, यहाँ पे सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के नाम आ जाएंगे, उनमें से एक है इग्नू। जैसे ही मैं इग्नू पे क्लिक करूंगा आप इस होम पेज पर पहुंचेंगे जहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे व्यू कोर्स कैटलॉग। जब आप कोर्स कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइन से एक एक जितने भी इग्नू के कोर्स जिनके एनरोलमेंट अभी ओपन है वो आपको दिखने लगेंगे। अभी 2023 के सत्र में, जुलाई 2023 के सत्र में हमारे पास लगभग 200 से ज़्यादा कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं और विभिन्न विषयों में ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो सोशल साइंसेज हों, हिस्ट्री हों और इकोनॉमिक्स हो, डिफरेंट डिसिप्लिन में हमारे कोर्स जा रहे हैं। यदि आप जाएंगे जब वेबसाइट पर और आपको कोई भी कोर्स सर्च करना है तो आप किसी भी कोर्स को सर्च करिए। जैसे मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा कोर्स है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन सोलर वाटर पंपिंग, जो कि इग्नू के द्वारा ऑफर है और बहुत ही यूजफुल कोर्स है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बेस्ड कोर्स है किसानों के लिए और जो बच्चे गाँव में रहते हैं अपना सोलर पावर पंप चलाना चाहते हैं उनके लिए। तो जब हम इस कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस कोर्स का हमारे को होम पेज दिखने लगेगा जहां पर लिखा हुआ है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन सोलर वाटर पंपिंग। यदि देखेंगे कि अभी तक इस कोर्स में बहुत ही कम समय में 272 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। इस कोर्स की आपको समरी दिखेगी कि कितने वीक का कोर्स है, क्या इसका कैटेगरी है, एग्रीकल्चर कोर्स है ये, किस लेवल का कोर्स है ये, प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, इसकी व्हाट इज दिस कोर्स ऑल अबाउट, इसका एनरोलमेंट, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके फायदे क्या है और आप कैसे करके इस कोर्स को पास कर पाएंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारा चीजें इसमें प्रोग्राम इंट्रोडक्शन पेज में दिया हुआ है। देन देयर इज अ कोर्स लेआउट। इन कोर्स लेआउट द होल थिंग हैज बीन डिस्प्लेड एज पर वीक वाइज। चलिए, Yes, because the Swayam course is offered on week basis. So how the content every week, which content will be delivered, the whole process is there. Then this is the introduction about the course offering team, course coordinator. You can see who is coordinating the course. Then if you want to join the course, what you have to do, you have to click on this link and you can join the course. You have to log in with your user ID and password. By doing this, you can join into any course. Now we will see some more courses on Swayam portal. डॉक्टर आशीष, अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको रोकूंगी तो मेनली क्या है कि ये ओडीएल वाले छात्र जो हमारे साथ जो अभी जुड़े हुए हैं
वो उससे भिन्न कैसे है। जैसे ओडीएल में आप एक स्टडी सेंटर में जाते हैं या आप एक रीजनल सेंटर है आपका, दूसरा स्टडी सेंटर है, आपको किताबें मिलती हैं, आप वो पढ़ते हैं, फिर काउंसलिंग में जाते हैं, फिर आपका असाइनमेंट सबमिशन होता है और टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है। सबसे ज्यादा फायदा स्वयं जो कोर्सेज का है जो आपने बताया वो ये है कि आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए, या लैपटॉप हो या आपके पास डेस्कटॉप हो या इवन मोबाइल फोन पे, तो आप उस पे स्वयं पे जाएं, स्वयं प्लेटफॉर्म पे जाएं और उसमें जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया उसको लॉग इन करें, अपने कोर्सेज देखें जो आपको अच्छे लगे और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बेसिकली अच्छा लगना मतलब जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट हो, जिस डिसिप्लिन में आपको इंटरेस्ट हो, वो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज मैं बताऊंगा, इग्नू के स्टूडेंट्स भी हैं। इग्नू के सपोज एक मैं कोर्सेज बताऊंगा, इग्नू का एमए हिंदी है, सो एमए हिंदी के भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं। बीए टूरिज्म और डिप्लोमा इन टूरिज्म, उन प्रोग्राम के भी कुछ कोर्सेज स्वयं पर उपलब्ध हैं। तो स्टूडेंट्स अपना ओडीएल प्रोग्राम करते करते एडिशनल लर्निंग भी स्वयं कोर्सेज से कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक फीचर जो है स्वयं में, वो है कि स्वयं के सारे कोर्सेज फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्वाइनिंग करने के लिए, आपको ज्वाइन करने के लिए किसी भी प्रकार के पैसे देने की, किसी भी प्रकार का धन देने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के पोर्टल में आपको रजिस्टर करने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा जरूरत नहीं है। यू कैन लर्न फ्रीली। आई विल शो यू सम मोर कोर्सेज ऑन स्वयं पोर्टल। तो आशीष जी एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। तो इसमें जैसा आपने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एडमिशन या नामांकन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो क्या इसमें कुछ एग्जाम का भी प्रोसेस है? जी हाँ, जैसा कि मैंने अब आपको बताया कि इसमें 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है, जहाँ का क्वाड्रेंट 4 असेसमेंट होता है। तो इसमें 2 प्रकार के असेसमेंट होते हैं। एक तो इनबिल्ट कोर्स में असेसमेंट होते हैं, जहाँ छोटे छोटे क्विज होते हैं जिनको स्टूडेंट करके अपना सेल्फ एक्सरसाइज कर सकता है, सेल्फ चेक कर सकता है। अंत में यदि आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए तो इस हर कोर्सेज का एग्जाम होता है, और ये एग्जाम साल में 2 बार कराया जाता है। जुलाई सेशन वाले कोर्सेज के लिए दिसंबर में और जनवरी सेशन वाले कोर्सेज के लिए जून में कराया जाता है। और ये जो एग्जाम होते हैं ये एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराई जाती है। ऑनलाइन एग्जाम होता है और इंडिया के लगभग सारे जो भी बड़े शहर हैं, मुख्य शहर हैं, उन सभी शहरों में ये एग्जाम कराया जाता है। तो जिनको ये एग्जाम जो है कंपलसरी नहीं है, जिनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, वो जो है वो एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इसमें अगर मैं और एक हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट ब्रेक लेंगे। Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system, or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance the media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system.
SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. Ignou employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का रीजनल सर्विसेज डिवीजन के स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर आशीष जी, हम लोग जो है बात कर रहे थे स्वयं चैनल के बारे में और उनके प्रोग्राम्स के बारे में जो इग्नू ऑफर करती है। तो अभी जो है क्या उस पे जो है आगे फर्दर हम लोग चर्चा जारी रखते हैं जी। तो अब हमने देखा कि कैसे आप स्वयं कोर्स में स्वयं कोई पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं, सारे कोर्सेज फ्री हैं, कैसे अलग अलग कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अब आपको लेके जाना चाहूँगा कि हम कैसे कुछ कोर्सेज को जो देख रहे हैं कैसे हम कोर्सेज को देखेंगे, और मैं कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूं। सो हमारे इग्नू जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो ऑफर करते हैं कोर्स सर्टिफिकेट लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं जो कि स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, जो बच्चों को जो रोजगार पाने में हेल्प करेंगे, जो उनके आगे नौकरी लगने में हेल्प करेंगे और स्वरोजगार करने में भी वो बहुत सारे हेल्प करेंगे। तो कुछ कोर्सेज को मैं बताना चाहूंगा। जैसे एक बहुत ही अच्छा कोर्स है एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मैं इस कोर्स के तरफ आपको लेकर जाना चाहूंगा। ये देखिए, दिस इज द कोर्स ऑन एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दिस इज ऑफर्ड थ्रू इग्नू स्वयं कोर्स। This is the course introductory video. Let's see some course introductory video, what the course coordinator wants to tell you and how you can get benefit from this course. I think आपको आवाज आ रही होगी। So this is the course on Android mobile application development, and this is the course detail from the course coordinator. Generally इस course introductory video में what they tell कि what is this course, what is the and eligibility criteria, who can join this course, what are the modality of this course, और इस कोर्स में क्या क्या कंपोनेंट रखे गए हैं, क्या क्या मेन सिलेबस इसका रखा गया है जिसमें आप पढ़ेंगे, इसमें कैसे आप पढ़ेंगे और इसका असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, कितने नंबर लाने पे आप पास होंगे, कितना नंबर असेसमेंट में होगा, कितना नंबर फाइनल एग्जाम का होगा, इस कोर्स के लर्निंग आउटकम क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आपके लिए रोजगार की संभावना क्या है। ये सारी चीजें
इंट्रोडक्टरी वीडियो में दिखाई गई हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और कोर्स दिखाना चाहूँगा। आज के समय में आप देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये बहुत ही प्रचलन में है, सभी लोग इसका कहीं ना कहीं से यूज कर रहे हैं। और इस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इग्नू ने इतने अच्छे नए कोर्स ऑफर किए। ये बिल्कुल नया कोर्स हमारे यहाँ से शुरू हुआ है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग, ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग प्रोग्रामिंग। बेसिकली दिस इज द कंप्यूटर साइंस कोर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, जहां पे बच्चे सीख सकते हैं कि प्रोलॉग लैंग्वेज का यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में आप कैसे जाएंगे। इसमें अगर मैं ऐड करूं डॉक्टर आशीष, जो आपने बताया कि स्किल बेस्ड कोर्सेज, तो जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे हमने बीए किया, बीए में अगर 80 क्रेडिट का अगर बीए का कोर्स है तो उसमें से आपने कुछ 20 क्रेडिट का कोर्स ये सब ले लिए मिला के, स्वयं से लिए, तो क्या हुआ, जब आप नौकरी ढूंढने जाते हैं, है ना, जब नौकरी ढूंढने जाएंगे तो आप जब दिखाएंगे कि मेरे पास 60 क्रेडिट तो मैंने बीए के कर लिए और मेरे पास 20 जो क्रेडिट थे उसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोर्स किया, मैंने मोबाइल के पे किया, मैंने एग्रीकल्चर वाले उसमें कोर्स किया, मेरे पास वो एक कौशल है, स्किल है मेरे पास, तो क्या है, वो नौकरी मिलने में बहुत सहायता करता है। जो आपने भी कहा कि नौकरी मिलने में जॉब ओरिएंटेड है, वो इस प्रकार से सहायता करता है कि आपका ना एक पोर्टफोलियो बन गया, कि आपने थ्योरी भी पढ़ लिया, आपने बीए के सारे सब्जेक्ट्स भी जो कर लिए, उसके साथ साथ कौशल को जो नौकरी लेने में आजकल काम आते हैं जो वाले कोर्सेज, उसको भी कर लिया। और एनईपी भी तो यही कहा गया है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कि स्किलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और खाली हमारे स्टूडेंट्स को ही नहीं, स्किलिंग मतलब जो घर में महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं या जो नौकरी कर रहे हैं, उनको अपने प्रोफेशन में, है ना, जैसे टीचर्स हैं, हम सब टीचर्स हैं, आप में से भी शायद बहुत सारे टीचर्स होंगे, कि आगे कौन सी नई नई पद्धतियां हम इस्तेमाल करें, वो स्किल लें, तो वो सारे कोर्सेज स्वयं पे हैं। इसलिए आपको उसका बहुत, स्वयं में अगर कोर्सेज लेंगे वो फायदा आपको बहुत मिलेगा। बिल्कुल सही मैडम। और कुछ और के कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे इग्नू में बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में ऑफर किए जा रहे हैं। आजकल भारत सरकार भी बोल रही है कि हमें रीजनल लैंग्वेज पे जोर देना चाहिए। हमारी एनईपी बोल रही है कि रीजनल लैंग्वेज में जब कोई चीज पढ़ाई जाएगी तो उसका प्रभाव ज्यादा अच्छा होगा, बच्चा ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। बिल्कुल सही। उसी तरह से हमारे इग्नू स्वयं के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो रीजनल लैंग्वेज में आ रहे हैं। जैसे कि एक कोर्स है आसामीज पोएट्री फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न लैंग्वेज, तो ये कोर्स एक आया हुआ है जो कि कृष्णकांता हांडी की ओपन यूनिवर्सिटी से है। इसके अलावा मैं और आपको कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, जैसे कि एक कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आजकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ज्यादा यूज हो रही है, सारे जगह बिजनेस है, आपको अकाउंटिंग को नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं, खाली अगर ये ना कहो कि बाहर हो, हमारे घर में भी हम लोग क्या, बिल्कुल सही, हमको अकाउंटिंग, हम सबको अकाउंटिंग की, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आप लोग सबको अकाउंटिंग की जरूरत है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत ही ये सरल भाषा में समझाया गया कोर्स है। और इस कोर्स के बारे में बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे लिया है। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने इस कोर्स को क्रेडिट ट्रांसफर के लिए अडॉप्ट भी किया है। इसके अलावा बिजनेस लॉ भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो इग्नू के स्वयं के थ्रू ऑफर हो रहा है। इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, आप देखिए इनकम टैक्स इस समय अभी चल ही रहा है, सबको इनकम टैक्स सबमिट करना है, 31 लास्ट डेट है। तो आप इस कोर्स को करिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपने साथ वालों को बताइए कि थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं। बिल्कुल हम इसको देख सकते हैं। ये कोर्स है इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस, ये कोर्स है। आप इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो चल रहा है, इसमें 20 यूनिट के द्वारा ये पूरा कोर्स कवर किया गया है और ये 6 क्रेडिट का कोर्स है। और सारे कोर्स अभी जो इग्नू के चल रहे हैं उनमें अभी जो एनरोलमेंट है चालू है। हमें से एडमिशन नहीं बोलते, एनरोलमेंट बोलते हैं। तो एनरोलमेंट चालू है। 31 जुलाई जो है इसकी कोर्स की स्टार्ट डेट रहेगी, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को।
और इस कोर्स का यदि इंट्रोडक्टरी देखेंगे तो दिस कोर्स इज कोर कोर्स इन BCom प्रोग्राम एंड इट इज कमिंग अंडर CBCS scheme. So the courses under CBCS scheme, they are also being catered through Ignou Swayam portal. ये है कोर्स का लेआउट जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार की सैलरीज के बारे, स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे करें, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन अलग कैसे करें, उसके 3 कंपोनेंट बताए गए हैं, कैपिटल गेन्स को कैसे आप अपने इनकम टैक्स में भरें बता सकते हैं, अदर सोर्सेज से जो इनकम हुई है वो कैसे फिल करें, ये सारा चीज़ें इन कोर्सेज में बताया गया है. मैं आपको कुछ और कोर्सेज के बारे में बताऊंगा. सबसे ज्यादा मेरे को लगता है जो फायदा ये आपने जो अभी दिखाए सारे स्वयं के कोर्सेज हैं वो ये है कि हम कक्षा में जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, तो वहां पे मतलब हमको 4 घंटे 5 घंटे हमको कहीं पे जाना पड़ता है या ODL सिस्टम में. पर स्वयं के कोर्सेज का ये सबसे है कि आप घर बैठे अपने ये कोर्सेज आप कंप्लीट कर सकते हैं, इनको पूरा कर सकते हैं. आपको सिर्फ एक शायद डिवाइस की जरूरत है बस, या और एक इंटरनेट की जरूरत है आपको, और कुछ नहीं, फीस नहीं है जैसे पहले कहा, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको इवन इम्तिहान देने भी कहीं नहीं जाना आपको, आप घर बैठे ही ये सारे कोर्सेज जो हैं आप स्वयं के माध्यम से ले सकते कर सकते हैं. इसके अलावा एक कोर्स बताना चाहूँगा. आज हम लोग सब कुछ बहुत सारा चीज़ ऑनलाइन बुलाते हैं, ऑनलाइन सामान खरीदी करते हैं ई-कॉमर्स के ऊपर, तो एक स्वयं में एक कोर्स है दैट इज़ आल्सो ऑन ई-कॉमर्स. बहुत ही बढ़िया कोर्स है. अभी देखिए इसमें 1260 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं. तो बहुत ही अभी ये कोर्स हमारे लगभग जुलाई के फर्स्ट में शुरू हुए और 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आप इतना, तो ये बताते हैं कि इग्नू के कोर्सेज कितने पॉपुलर हैं और कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि स्टूडेंट्स इग्नू के कोर्सेज को ले रहे हैं. इसके अलावा एजुकेशन से फील्ड से रिलेटेड हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, जो भी टीचर्स हैं जो B.Ed कर रहे हैं या DLED कर रहे हैं या फिर आगे उनके बच्चों का प्लान है फ्यूचर में एजुकेशन वाले कोर्सेज करने के लिए, तो उनके लिए कोर्सेज हैं टीचिंग एंड लर्निंग, पेडागोजी ऑफ साइंस, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग, ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं. डिसिप्लिन, इस कोर्स के बारे में बताऊंगा मैं, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट. ये कोर्स इग्नू का बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसे क्रेडिट ट्रांसफर के लिए लिया हुआ है. इसमें मैं और डॉक्टर आशीष एक बात ऐड करूंगी कि खाली हमारे जो इतने भी कोर्सेज हैं इग्नू जो ऑफर कर रहा है स्वयं प्लेटफॉर्म पे, वो खाली इंग्लिश में नहीं है, 6 भाषा में हमारे ये कोर्सेज हैं. तो आप लोग वो कर सकते हैं. हिंदी इंग्लिश में तो ही है, पर हमारे यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो उर्दू में भी है, हमारे पास असमीज में है ये कोर्स, संस्कृत में कुछ कोर्सेज हैं, संस्कृत के कुछ हमारे पास कोर्सेज हैं. तो मतलब जो आपको और बाकी की भाषाओं में अभी आ रहे हैं वो हम लोग उसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं और नए कोर्सेज रीजनल लैंग्वेज में हम लोग डेवलप कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा फायदा है स्वयं के कोर्सेज या स्वयं प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज में एनरोल करने का, उसमें एडमिशन लेने का बहुत बड़ा फायदा है कि हम अपनी भाषा में उसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं. इसके अलावा हिंदी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे हमारा MA हिंदी प्रोग्राम जो चलता है ऑनलाइन, उसके सारे कोर्सेज जो हैं छोटे छोटे कोर्सेज वो सारे स्वयं पर भी अवेलेबल हैं. MHD2, MHD3, MHD4. ये देखिए MHD3 जिसमें प्रॉपर हिंदी में लिखा हुआ है, कंटेंट है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सारा जो डिटेल दिया हुआ है वह हिंदी में दिया हुआ है. तो आप इस प्रकार के कोर्स भी स्वयं के प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं, कर सकते हैं. यानी कि आपको फ्रीडम है कि आपको किस टाइप का कोर्स चाहिए, किस लैंग्वेज में कोर्स चाहिए, कितने ड्यूरेशन का कोर्स चाहिए. आपको सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर चाहिए तो क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं, सर्टिफिकेट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो नहीं ले सकते हैं, घर पे पढ़ना है तो घर पे पढ़ सकते हैं किसी भी समय पर. तो इतने सारे फ्रीडम स्वयं के कोर्सेज में अवेलेबल हैं. आप जाइए और स्वयं के कोर्स को ब्राउज कीजिए और पढ़िए. हेलो हाँ, अपना प्रश्न पूछिए. मेरा सवाल ये है कि मैंने MEG प्रीवियस अभी भरा है, रिजल्ट अवेटेड है, और जब हमने सेकंड ईयर के लिए सर भरा है जो कोर्स, उसमें जो हमारा कंपलसरी वाला सब्जेक्ट आता है, हाँ. वो ये बोल रहे हैं कि उसका ड्यूरेशन लिख रहा है 2 इयर्स.
तो क्या हमें 2 साल और लगेगा इसके बाद इस कोर्स को करने के लिए? कंपलसरी में 2 years तो लिखता है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसके बाद और 2 साल नहीं लगेगा। देखिए हमारे यहाँ जो है ना मिनिमम ड्यूरेशन होता है और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। तो मिनिमम ड्यूरेशन मास्टर डिग्री का 2 years ही है। तो अगर आप मिनिमम ड्यूरेशन में कंप्लीट करती हैं तो 2 साल में करती हैं, और मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 years है। तो 4 साल आपको जो है समय मिलेगा टोटल आपको कंप्लीट करने के लिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करिएगा तो उसमें दिखाएगा मैक्सिमम ड्यूरेशन। सर थोड़ी आवाज का इशू आ रहा है शायद आप लोगों के स्टूडियो पे, हम तक सही नहीं पहुंच रही है, या लाइव चैट बंद हुआ है और शायद फोन पे सही नहीं आ रही है स्टूडियो की वजह से। इफ पॉसिबल सर, क्या आप हमें चैट बॉक्स में मेरा आंसर दे देंगे इफ यू गॉट माय क्वेश्चन प्लीज? देखिए मेरा ये कहना है कि इग्नू में फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की। आपको अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए मिनिमम ड्यूरेशन में भी आप कंप्लीट कर सकती हैं। अगर किसी कारणवश आप जो है नहीं कंप्लीट कर पाती मिनिमम ड्यूरेशन में, तो उसके लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है। वो जो आपका टाइम दिखा रहा है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन का हो सकता है। नाउ आई गॉट। इसका मतलब ये है कि ये मिनिमम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सब में तो आपका वही पीरियड आ रहा है 1 साल का, इसी में 2 आ रहा है जो कंपल्सरी है। हाँ, तो वो जो है आपको जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन में आपको जो है वो कंप्लीट करना हो। थैंक्स अ लॉट। एक और मैं डॉक्टर आशीष बात करूंगी और फिर हम आगे भी देखते हैं कि कौन सा अभी एडमिशन डेट क्या है, और बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे, आप पूछिए कि ये जो हमारे स्वयं के जो कोर्सेज हैं वो बेस्ट ऑफ द टीचर्स ने बनाए हैं। जी बिल्कुल सही मैम, है ना। तो जितने भी वो है कि हम कहते हैं ना कि भी अब जो कंटेंट है उसका, जो प्रेजेंटेशन है उसका, वीडियोस जो है वो जो है स्वयं के कोर्सेज जो है बेस्ट ऑफ द टीचर्स है, और बहुत ही क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं उसके द्वारा वो चुने जाते हैं। बिल्कुल। और जो भी हमारे लर्नर्स हैं उनको जो है इजीली समझ में भी आने वाले हैं। सबसे अच्छी खास बात यही है इस प्रोग्राम की। और तो स्वयं के एडमिशन के बारे में, स्वयं के कोर्सेज के बारे में हमने जान लिया। स्वयं का एडमिशन चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इग्नू प्रोग्राम्स का भी एडमिशन अभी खुला हुआ है। तो सिंह सर से मैं आग्रह करूँगा कि वो इग्नू के जो प्रोग्राम अभी ऑफर में है उसके बारे में हमें जानकारी दें कि क्या डेट्स हैं, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, कैसे फॉर्म भरना है। जो भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए हमारा जो है इग्नू का नामांकन एडमिशन प्रोसेस चल रहा है जुलाई 2023 सत्र का। इसके लिए डेट एक्सटेंड हुई है। अभी 31 जुलाई 2023 अंतिम तिथि है नामांकन कराने की। तो जो लोग इच्छुक हैं, नामांकन कराना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इग्नू के वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो उनको जो है ओडीएल मोड में अगर लेना चाहते हैं तो ओडीएल से, और नहीं तो फिर अगर ऑनलाइन मोड में वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका भी पोर्टल ओपन है। इग्नू में इस समय जो है 3 टाइप्स ऑफ कह सकते हैं एडमिशन। हेलो। हाँ सर, मेरा एक क्वेरी है क्योंकि मैंने पिछले साल ही मेरा अपना ग्रेजुएशन का एग्जाम फाइनल दिया था जुलाई सेशन में। जुलाई बाद मेरा जुलाई सेशन में जून, हेलो, जून में ही सर, जून सेशन। तो मेरा एक मार्कशीट अभी तक आया नहीं है। मैंने इसके लिए काफी रीजनल सेंटर में भी बार बार गया हूँ, तो उन्होंने एक बार तो बोला कि ड्राफ्ट जमा कर, तो मैंने ड्राफ्ट भी जमा किया है। और पिछले बार भी बात किया था मैंने, तो उन्होंने बोला था मैं देखता हूँ कुछ होता है तो। बट सर उसके वजह से मैं और एडमिशन भी नहीं करवा पा रहा हूँ, ना ही कुछ और चीज के लिए अप्लाई कर पा रहा हूँ। नहीं, एक बार मेरी बात आप सुनिए। आपने कौन सा प्रोग्राम हमारे यहाँ से कंप्लीट किया है? बीएजी। तो आपने वेबसाइट पे ग्रेड कार्ड स्टेटस देखा है? इग्नू के वेबसाइट पे कंप्लीटेड शो कर रहा है? सारा कंप्लीट है। ऑल जितने भी कंपोनेंट है आपके, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, सारे कंप्लीटेड है जी। तो आपने अपना एड्रेस चेक किया था जो आप एड्रेस दिए हुए हैं? जी, हाँ, मेरा एड्रेस मैंने चेंज ही नहीं किया, मेरा जो है मेरा वही है। अच्छा, क्योंकि पहले भी मेरा ये स्टडी मटेरियल वगैरह भी आ चुका है, आया है मेरे एड्रेस पे ही।
अच्छा, कितने बार, तो क्योंकि मैंने चेंज ही नहीं किया है। तो आप अपना एक बार इनरोलमेंट नंबर आप अपना बता सकते हैं? 1942 1942 84 84 328। 328 BAG प्रोग्राम बताया आपने? जी हाँ। ठीक है, तो ये डीडी आपने किस चीज के लिए जमा किया था? मार्कशीट के लिए। कहाँ पे भेजा था? दिल्ली मेन मैदानगढ़ी में। मैदानगढ़ी में। कुछ एड्रेस आपको याद है, कुछ मालूम? कुछ एड्रेस तो एक्चुअली याद नहीं है, जो उसमें फॉर्म में लिखा हुआ था उन्होंने बोला था यही सेम एड्रेस डाल देना। तो स्पीड पोस्ट से भेजा था आपने? जी हाँ, स्पीड पोस्ट से भेजा था। तो चेक किया था उसको कि पहुंचा कि नहीं? वहाँ से मैसेज भी, मेरे को मैसेज भी आया कि आपका स्पीड पोस्ट डिलीवर हो चुका है इस जगह पे। अच्छा अच्छा। हाँ, डिलीवर्ड का भी मैसेज मुझे आ चुका है, बट मेरे पास वो उसका प्रोसेस नहीं हो पाया मेरे पास, क्योंकि तो एक बार आप अपना एड्रेस चेक कर लीजिएगा। अगर आप एड्रेस अपना सही से लिखे होंगे, पिन कोड सही होगा, तो फिर से दोबारा हम इसको जो है यहाँ से भिजवाने का प्रयास करेंगे कि इमीडिएट आपको जो है यहाँ से डिस्पैच हो जाए। कर लिया मैंने, पिछले बार भी लगता है 2 सप्ताह पहले बात किया था मैं मैम से, एक थी स्टूडियो में ही। तो उन्होंने भी बोला था कि मैं बताती हूँ, मैं चेक करके, फिर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया मुझे। नहीं, चूंकि देखिए रिजल्ट जो डिस्पैच होता है वो हमारे यहाँ स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन है, SED, वहां से होता है। जिस क्षण आप जिस भी टर्म एंड एग्जाम में आपका टोटल कंपोनेंट कंप्लीट हो जाता है, असाइनमेंट हो, टर्म एंड हो, प्रोजेक्ट हो, प्रैक्टिकल्स हो, तो उसी समय जो है इमीडिएट आपका ग्रेड कार्ड और प्लस जो है GCPC बोलते हैं, ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो प्रिंट आउट अपने आप निकल जाता है। वैसा सिस्टम है और वो डिस्पैच सेक्शन में चला जाता है जहां से डिस्पैच कर दिया जाता है। तो एक ही केस ऐसा होता है कि अगर जो है आपका पोस्टमैन रिटर्न कर दे तभी वो रिटर्न होता है, अदरवाइज जो है वो चूंकि स्पीड पोस्ट से जाता है तो आपको जो है मिलना चाहिए था, अभी नहीं मिला है, तो मैं ये पता करके आपको जो है भिजवाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो क्या ये डाउनलोड भी कर सकते हैं? नहीं मैम, चूंकि डाउनलोड का जो होता है ऑप्शन, उसमें सिर्फ ग्रेड कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फर्दर यूज नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ओनली इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ऐसा कई बार होता है, जैसे हेलो हाँ बोलिए सर। मैं 2022 में MCA में एडमिशन लिया था, ऑनलाइन लिया था, और इसके बाद में आज तक तो एग्जाम हुआ नहीं मेरा 2022 का, और मेरी साल भी खराब हो गई। और नहीं, एक मिनट, आप MCA OL में एडमिशन लिए थे? नहीं, ऑनलाइन में, इसी में। आपने एडमिशन लिया ऑनलाइन में MCA में। इम्तिहान इस साल 3 बारी हो गए, अप्रैल में हुआ, मई में हुआ, जून में हुआ इम्तिहान। मैं थोड़ा सा, दरअसल देखिए, आप ऑनलाइन में एडमिशन कर रहे हैं, अभी हमारा टोटल एडमिशन ही ऑनलाइन सिस्टम पे है। मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूं कि आपने जो है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड चूज किया था या ऑनलाइन मोड चूज किया था? ऑनलाइन मोड किया था। अच्छा, ऑनलाइन मोड चूज किया था। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो लर्नर्स, आप फिर इसका मतलब LMS आप नहीं देखते हैं। तभी हमने कहा ऑनलाइन मोड के इम्तिहान जो है, आपने 2022 में एडमिशन लिया, उसके इम्तिहान हमारा जो एग्जामिनेशन डिवीजन है SED ने अप्रैल में कराया, फिर मई में कराया, और उसके बाद अभी जून में भी कराया। आपको अपना LMS देखना चाहिए, आपको इग्नो की वेबसाइट देखनी चाहिए। एग्जाम फॉर्म की वही नहीं आया। क्या नहीं आया? जो जहाँ एग्जाम भरना था हमें। हाँ, तो जहाँ एग्जाम फॉर्म इग्नो के वेबसाइट पे होम, हमारी फीस एग्जाम की एक्सेप्ट नहीं हुई, हो कैसे गया मुझे यही नहीं पता लगा। नहीं, DD के थ्रू एग्जाम, और मैं 2 बार गया डिवीजन में भी पूछने के लिए। DD के थ्रू एग्जाम नहीं लिया जा रहा था, आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना था, और जो मेन वेबसाइट, वो फॉर्म निकलेगा तभी तो करेंगे। हम आपको यही बता रहे हैं
कि वो इग्नो की वेबसाइट पे होम पेज पे पूरा लिंक आया था, आपके एलएमएस पे भी वो लिंक आया था। मॉड्यूल पे निकल रहा था लेकिन ऑनलाइन का नहीं हो रहा था। नहीं ऐसा तो नहीं, इतने बच्चों ने दिया ना, अभी काफी बच्चों ने दिया, और 3 दफा हुआ, 1 दफा भी नहीं हुआ, 3 बारी इम्तिहान हुआ, इग्नो ने कंडक्ट किया इम्तिहान। अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी दिसंबर में फिर होगा। ध्यान रखिएगा, आप इग्नो वेबसाइट चेक करिए, अब वहां पे आपको लिंक मिलेगा, फॉर्म भरिए, फिर आपको हॉल टिकट भी ऑनलाइन मिलेगा। आप अपना एलएमएस चेक करिए, वहां पे भी पूरा डिटेल लिखा होगा, इंफॉर्मेशन रहती है। और आप अभी एक चीज और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना सेकंड सेमेस्टर में या जो भी आपका सेमेस्टर होगा उसमें री रजिस्टर हो जाइए, क्योंकि नहीं तो फिर उसका भी डेट निकल सकता है, क्योंकि ये 31 जुलाई उसका भी लास्ट डेट है। और इग्नू में ये सिस्टम है कि आप जो है जब फर्स्ट ईयर में आप रहते हैं तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय ही आपको सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर का भी एग्जाम री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। चूंकि समय हो रहा है, हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे इग्नू के एडमिशन प्रोसेस की। इग्नू में जो लास्ट डेट है अभी अनाउंस हुई एडमिशन के लिए जुलाई सत्र 2023 के लिए 31 जुलाई 2023 अंतिम तिथि है। तो जो लोग ओडीएल मोड में या जो है ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग जो है इमीडिएट अपने आप को रजिस्टर करके नामांकन करा सकते हैं। इग्नू का प्रोसेस काफ़ी आसान है, सिंपल है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे FAQs दिया हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आप जो है उसको देख सकते हैं और अपना नामांकन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो है देखने के लिए, और आशीष जी और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। Are you a fresh graduate? Do you want to fulfill your educational aspiration by pursuing higher education in various interdisciplinary and multidisciplinary areas like environmental science, environment and occupational health, philosophy, sustainability science, folklore and culture studies? If yes, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies offers various programs like Master's Program, Graduate Program, Postgraduate Diploma, Certificate and Appreciation Program. The school offers 5 Master's Programs. Master of Science, Environmental Science. The eligibility criteria for MSc Environmental Science is Graduate in Science, BTech, BE, Agriculture Graduate, Forestry Graduate and Veterinary Graduate. School also offers Masters in Environment and Occupational Health, Masters in Sustainability Science, Masters in Philosophy and Masters in Folklore and Culture Studies. The eligibility criteria for these 4 Masters program is graduate in any discipline. School also offers various socially relevant and need-based PG Diploma program like PG Diploma in Sustainability Science, PG Diploma in Environment and Occupational Health, PG Diploma in Folklore and Culture Studies and PG Diploma in Migration and Diaspora Studies. The school also offers PG Certificate in Climate Change and Avshist Prabandhan Mein Praman Patra. The school also offers 2 doctoral programs, PhD in Environmental Science and PhD in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. The school offers various innovative technologies and multimedia for providing a very excellent student support system.
The study material is of high quality. The learner support is provided through Gyan Darshan, Gyan Vani, IRC, Swayam Prabha and Swayam channel of Ignou. For more detail, please log in to Ignou website. For online admission in these programs, visit school site and also the Samarth online education portal of Ignou. So please join these programs and fulfill your educational aspiration. Hello learners, our lecture is on blockchain technology. It is the unit 4 basics of blockchain technology for the students of diploma in smart city management and development as well as certificate in smart city development and management. So the learners, first of all, we have to understand about what is blockchain technology, what are its uses, what are its benefits, how it is evolved, what are the benefits and what are the applications of this blockchain in the industry and various applications in the smart cities. So today in this lecture we are learning about the basics of blockchain technology. So the whole point of using a blockchain is to let people, in particular people who don't trust one another, share valuable data in a secure and tamper-proof way. It was given by MIT Technology Review. So what actually blockchain technology came, why it came? So because there is the data has to be shared or money has to be shared between 2 parties, 3 parties, like that. So there is a lack of what you can say that is it properly coming or not. So trustworthy is very much required. So for that, or some nowadays I think you people know about there are various online transactions are failed or it was diverted to other things. So and in the data the cyber security attacks are coming up. So all this to avoid and to block all these things, the blockchain technology came and evolved. This blockchain technology evolved in 2009. So first of all, we should understand what is blockchain technology. Blockchain, sometimes referred to as distributed ledger technology, makes the history of any digital asset unalterable and transparent through the use of decentralized network and cryptographic hashing. So because of blockchain technology, any transaction takes place or information sharing takes place without any problem or without any altered or any attacked by anybody. So that's why this blockchain technology, it is a foolproof for the transaction without any altering the information by others. Once a block is developed, nobody can alter the information until and unless all the again it has to go to first block, and from there again it has to come. So everybody has to approve. So then only that transaction will be taken place. That information will be shared properly. So that is the use of this blockchain technology. Blockchain is a shared immutable ledger that facilitates the
process of recording transactions and tracking assets in a business network. An asset can be tangible or intangible. Virtually anything of value can be tracked and traded on blockchain network, reducing risk and cutting cost of all involved. In the network, there are number of people are involved. So the transaction is taking place with a foolproof, means not tampered by anybody, or tampering or immutable. Any information cannot be altered, so that the transaction takes place properly. So that is the use of this blockchain technology. The characteristics of blockchain technology. So blockchain is a digital ledger or database where encrypted blocks of digital asset data are stored and chained together, forming a chronological single source of truth for the data. Digital assets are distributed, not copied or transferred. Digital assets are decentralized, allowing for real-time accessibility, transparency, and governance amongst more than one party. Blockchain ledgers are transparent. Any changes made are documented, preserving integrity and trust. Blockchain ledgers are public and constructed with inherent security measures, making it a prime technology for almost every sector. These are the various characteristics of the blockchain technology. So, then why is it important, the blockchain technology? Means business runs on information. So see, the business runs on information. Information has to be transferred from one people to another people, or one transaction, one place to another place. So that information has to be fast and perfect. So that is the faster it is received and the more accurate it is, accurate and it is the better. So blockchain is ideal for delivering that information because it provides immediate, shared and completely transparent information stored on an immutable ledger that can be accessed only by permission network members. So this is the blockchain. Why the blockchain is important? Because in the blockchain system, there are number of people are involved in transactions. So in the transactions, this blockchain technology having the various blocks. So each block and each node, one has to give the approval. Then only that blockchain transaction takes place. A blockchain network can track orders, payments, accounts, production, much more. And because members shares a single view of the truth, you can see all details of a transaction end to end, giving you greater confidence as well as new efficiencies and opportunities. Then key elements of blockchain. What are the key elements of blockchain? So distributed ledger technology. All network participants have access to distributed ledger and it is immutable record of transaction. What does it mean? Here that all the network people are involved in a one network. So a customer, supplier and the bankers and more those who are to approve all those things. So that is like subcontracts. In the or we can say it as a smart contracts. In the smart contracts, there are number of people are involved in doing some work. Suppose it is construction work or any type of transaction takes place in the construction work. Suppose a customer wants to buy a house, so their banks are also involved to give the loans, and the customer has to pay the whatever the amount to the builder, so that
the three people are involved. Suppose here we say three people are involved. So the payment, if it is smart contracts that agreement has made. So then according to the time to time, the payment, the loan, everything is taking place without any a disturbance. So that is, everybody will means approve that process. That is the use of this blockchain technology. So the process will take place timely, the construction or timely payments will be made, the timely loan will come. So everything, the process is time, at what time it has to be transferred, the amount, at what time the builder has to give the building to the customer. So all these things will be in the smart contracts. So that is the advantage of a blockchain technology. Then immutable records. So what is immutable records? In the immutable records, a record is prepared. No participant can change or tamper with a transaction after it is been recorded to the shared ledger. So if a transaction record includes an error, a new transaction must be added to reverse the error, and both transactions are then visible to each and every person involved in the transaction process or in the network. Then the smart contracts. To speed transaction, a set of rules called a smart contract is stored on the blockchain and executed automatically. A smart contracts can define conditions for corporate bond transfers, include terms for travel insurance to be paid, and much more. So these are all called smart contracts. Then how blockchain works? So as each transaction occurs, it is recorded as a block of data. So any transaction, one transaction takes place, it is known as a block or a data of block. Those transactions shows the movement of an asset that can be tangible, a product, or intangible. It is the intellectual property right or the patent, anything that is intangible. The data block can record the information of your choice, who, what, when, where, how much, and even the condition such as the temperature of the food shipment. All these can be recorded in a block. Each block is connected to the once before and after it. So there are number of blocks will be there. So all those blocks will be connected. These blocks forms a chain of data as an asset moves from place to place or ownership changes hands. The blocks confirm the exact time and sequence of transactions, and the block links securely together to prevent any block from being altered or a block being inserted between two existing blocks. Transactions are blocked together in an irreversible chain, a blockchain. Each additional block strengthens the verification of the previous block and hence the entire blockchain. This renders the blockchain tamper evident, delivering the key strengths of immutability. This removes the possibility of tampering by a malicious actor and builds a ledger of transactions you and other networks members can trust. So next, transactions. So transaction, 1 minute. The transaction, what is the transaction process? Transaction initiation, transaction authentication, block creation, and block validation, and block chaining. So all these things we will see in the next PPTs. So this is the transaction takes place in this line. What is decentralization in blockchain? One of the most important concepts in blockchain technology is decentralization. No one computer or organization can own the chain. Instead, it is distributed ledger via the nodes connected to the chain. Blockchain nodes can be any kind of electronic device that maintains copies of the chain and keeps the network functioning. Every node has its own copy of the blockchain
and the network must algorithmically approve any newly mined block for the chain to be updated, trusted, and verified. Since blockchains are transparent, every action in the ledger can be easily checked and viewed, creating inherent blockchain security. Each participant is given a unique alphanumeric identification number that shows their transactions. Combining public information with a system of checks and balances helps the blockchain maintain integrity and creates trust among the users. Essentially, blockchains can be thought of as a scalability of trust via technology. So here you can see once the transaction, how the blocks are prepared and how the transaction is taking place, and if any problem comes, how it can be rectified, how it can be identified. This we can see that suppose a data is created or a transaction is taking place, then at that time a hash also creates, and previous hash, or in a block data, hash, and hash of previous block will be identified. Then, for example, in a Bitcoin blockchain, a data is transferring from A to X with a certain amount. So, for that a data is created. Then a hash is developed. So, hash means it is authentication by each block member. So, that has to be authenticated, that is approved. Then only the transaction will be taken place. For hash, some code will be generated. So here you can see hash of previous block. What is hash of previous block? That you can understand. So by seeing, so there are 3 blocks are there creating a blockchain. So that is, so hash of previous block. So it is in the first, it is by seeing one example you can see here. So in example you can see here. So here the first block is having hash of 1ZBF, and the previous hash, because it is the first one, there is no previous back, that's previous hash, that is 000, and the hash created for first block is this one, and the second block is created, then hash is, that is second hash, that is, and the first previous hash is similar to the first one. So it should be similar, then only that block will be inserted and the chain is created. So that's why, like similarly, the 3 also, block 3, here you can see the transaction of this hash and the previous hash is similar. So that's why the third block is also inserted. So there is no any problem in this blocks creation or blockchain. So the transaction will be proper. For example, here you can see that also again we have to verify. So hash, first block hash and second previous hash should be same. Then only the chains will be proper and the transaction is proper. So in the second block and third block also the hashes are same. So that's why it is accepted. The transaction will be taken place. So and the genesis in the starting what you can say genesis block, it is having 000. That previous block there won't be any previous. That's why we can call it as a genesis block, or it will be given 000. So that's why there is no need to cross checking. So but in the first block and second block, the the hashes will be same, so the chain will be continued. Like that, every block, any new block is coming, all these hashes will be checked. First hash and second hash, like that second and third, this previous hash, this will be checked, then only it will be approved, checked by all the network, those who are participating in the network or business transactions. So everybody will be approved. So then only that again another block will be created. So if it is got tampered, so what happens? Once it is tampered means, so they do, this hash and previous hash will not be matched. So then immediately one can identify, and one can go to again the process. If it is 50 blocks has created, at the 50 place it is somebody hacker
are tampered, so then immediately it identified, again it has to come to all the till first block, and again it has to go take the process. But here we are showing at the second block itself that some tampering is going on. Immediately it is identified and it goes again first block, and the process will take further. So then only it will be approved. If there is matching these hashes, first hash and previous hash, then only it will be the process will be taken place. So that is the use of this blockchain technology. So see here, full proof of work, PW. So it will take the 10 minutes. It will check is it proper or not. Then it has to go back and it has to process. Then here in the P2P network, so all the persons or nodes, you can call this P2P network, person to person network, that are you can nodes, we can call it as nodes. So this is the network of people who are involving in the transaction process and in the blockchain network. So all of them receives the whole copy of the blockchain. So any transaction process, all people will receive, all the nodes here, all people will receive the whatever the transaction, or you can say the document or any transaction is going on, everybody will receive and everybody will see at a time itself. So once it is new block is coming up, so new block is created and it will be transparent to everybody. Some process is going on, so everybody will observe according to their rules, so that then only they will give approval. So if it is, so each node verifies the new block. So if all gives yes, if it is correct, then only that transaction will be taken place. So like this. So all the nodes, all the P2 person to person, everybody will give the approval. That is consensus. They give it is okay, then only that transaction will be taken place. That is the use of this blockchain technology in a banking transaction, in a supply chain management system, or in a healthcare management system, data security. I think you heard about that AIMS data has been hacked. So such type of, that is an important data of the patients, that if it is hacked, so then it will be very difficult for the people to give the medicines to the people, the patients. So where such type of information has to be secured properly. So for that, this blockchain technology will be very much essential. Even in railway reservation system, so there also it works very efficiently. So if it is not proper, then the tickets issue will be different, the trains will be moved differently. So all these things happens. So in such a way, the blockchain helps to make the transaction foolproof. So that is the benefits of blockchain. Greater trust between the people, trust between the parties, or the supplier or the consumer, or you can say that parties, n number of parties are involved in that. So everybody is having a trust on that transaction, that party. So that is the use of blockchain technology. Once the blockchain technology implemented, simply they can work themselves for giving means what you can say, my transaction is properly handled through blockchain technology. So he will have the trust on that process. That is one, greater trust. With blockchain as a member of a members only network. So means in the members will be identified. Then only they will call as a member of members. You can rest assured that you are receiving accurate and timely data, and that your confidential blockchain records will be shared only with network members to whom you specifically granted the permission. So here we can say what that the trust, it is approved by each member, so that information will be shared to that members only. That is the meaning. That is great trust. Then greater security. So this is also one important
through blockchain technology. Greater security is more important. Consensus on data accuracy is required from all network members, and all validated transactions are immutable. Immutable because they are recorded permanently. No one, not even a system administrator can delete a transaction. So more efficiencies with a distributed ledger that is shared among members of a network. Time wasting, record consensus are eliminated, and to speed transactions, a set of rules called a smart contracts can be stored on the blockchain and executed automatically. These are the various benefits. So the benefits of smart contracts you can see. With the smart contracts, we will get the speed, efficiency, accuracy, trust and transparency, security and savings. Then with this, learners, I hope you understood about the blockchain, how the transactions has been created, and how the blocks will be helpful, how the blocks will be created, and once the created, how it will be checked. So then only once it is approved by each member of that network, then only it will be transaction takes place. So with this, the blockchain is a digital database composed of encrypted blocks of data which are chained together and secured by complex math problems. So this is the blockchain, means basics of blockchain technology, and in the next chapter we will learn about the blockchain applications, and another chapter we will learn the blockchain applications in the smart cities. So with this, thank you very much for listening this lecture. Thank you. If any doubts, you can mail me, and you can send email to me, but mail is given wrongly here. So you can check my email I think from my website. Okay, thank you very much. We wear clothes on a daily basis. But have we ever wondered, where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in.
Good evening, viewers. I welcome you all for today's session. I am Dr. Dilip Divakar from School of Social Work. Today I am going to talk on the introductions to social work research. So first I just wanted to present you the background or the outline of today's presentation. If you see today's session, I will be first actually trying to take you in terms of understanding what is social research. Then I will be discussing on the characteristics of the social research, and then we will be moving on in terms of understanding the basic presumptions of social research. Next, we will enter into the core content, that is what is social work research, and then we will try to understand the objectives, nature and the scope of social work research, and finally we will try to see how we can integrate the social work research into practice. First, if you are trying to understand what is research, as you all know, research is one of the very important aspects in terms of understanding any social phenomena, a problem or an issue. And when we are trying to understand this, we try to do it in a very, very systematic way, in a scientific manner, so that the findings which we get from the research, we could be able to use in practice as well as in terms of the policy making. And doing this research, we always use a critical investigation, because we need to know both the pros and cons, both actually the positive and the negative aspect, the issue in which we are looking upon. And secondly, we need to understand the social research usually being undertaken in a natural phenomena. Whereas in case of the natural science, the research is conducted in a setting where it is being fully conditioned. But in case of social research, it is being conducted in a natural phenomena. And we need to see in terms of we are trying to describe, explain and understand the various relationships which exist in the natural phenomena. And next, we will be trying to understand the characteristics of the social research. So when we are trying to understand the characteristics, the first and the foremost we need to understand we are dealing with the humans and human at large. And the characteristics of human being, it's a very, very heterogeneous people where they have their own characteristics in the sense of either it could be man, woman, or they are having their own identity, which in terms of their caste, religion, ethnicity. So there are various actually characteristics which are part of the human. And secondly, it is very, very complex because of their various identities. And it is very dynamic in nature because it is not always the same. A human being interact or in terms of relate with the other person. So it is keep on changing, so it is very dynamic. And secondly, we need to understand it is not like the natural science we are conducting in an actually a certain conditioned ambience. It is conducted in the natural setting. So, and the third one is that it is having a lot of objectivity. It is actually having a lot of subjectivity. And the generalization which comes, it is majorly depend upon the individual's perception. So we need to see how we are going to bring in objectivity in the research. So then only we could be able to see the findings which we get can be used at large. And thirdly, keeping aside the generalization, the individualistic generalization and subjectivity, there are a lot of actually provisions which is available in the research wherein we could be able to avoid all this subjectivity and bring in certain objectivity, so that the findings which we get, we could be able to generalize it and we could be able to make use at the policy level as well as at the intervention. And next, when we are trying to see the presumptions of research, the first thing is that all interactions follow some kind of a natural law and trend, at least for a short period. So this is one of the major presumptions that we have in terms of social research, because we believe certain things are happening and it follows certain actually trends or certain pattern, and we could be able to study or understand that particular pattern, and based on our understanding we could be able to make use of that in terms of doing any intervention. And second thing is that many a times we lack that knowledge in terms of understanding those phenomena or the patterns. So if you could be able to gain that knowledge, we could be able to understand that particular actually patterns or in terms of the trend in a much, much better way or in a much comprehensive way which can be made use of. And thirdly, the presumption is that we could be able to classify the patterns or the traits which we could be able to see in the research. So once we could be able to
classify that, we can make use of that in terms of doing any intervention. And the last actually presumption is that social interactions follow certain definite order. Since they are following a definite order, at least for a short period, the findings which we get, we could be able to make use of it. And next thing is that we need to understand actually the second important aspect, what is actually social work research. It is the application of research method to the production of knowledge that the social worker need to solve problems they confront in the practice of social work. The social work use actually both the primary and the secondary methods. So if you see in terms of the primary methods, majorly we use actually social casework, social group work, or in terms of actually the community organization. In the secondary method, we use in terms of community organization, social action, social research, and social welfare administration. In both the things, understanding this method and gaining certain knowledge how we are going to better use this method is very, very important. And secondly, this knowledge is helpful in appraising the effectiveness of the method and the technique. So once we could be able to generate certain knowledge, we could be able to appraise, we could be able to improve the methods which we are doing in terms of the research. And thirdly, we need to see that social work research typically focuses on the practitioner's work, either when they are dealing with the individuals, or when they are dealing with the groups, or when they are dealing with the families and communities. And fourthly, it provides information to the social worker prior to decision making. So once they gain this knowledge in terms of about the individual groups and the families, when they are going for any programs or any policies, this information can be used for the decision making. Next, when we are trying to understand the areas of social work research, the social work research has been conducted in various areas, starting with community, or in terms of school, or in terms of hospital setting, or in terms of health setting, or in terms of the various issues understanding, either it could be related to child labor, women, domestic violence, or the issues against the women. So various areas we are applying the social work research. But when we are applying the social work research, we try to look upon certain aspects, whichever the areas it might be. The first and the foremost thing is to establish, identify, and measure the need of the service. So first, when we are entering into an area, we need to know what is the problem they are facing, what are the need they are having. So that is what actually first we are trying to understand or study through the social work research. And secondly, we are trying to measure the services which they need to address those problems or in terms of their requirements. And the third one is that test to or gauge actually the evaluation methods which we are using for the interventions. Usually we use actually various tests or in terms of scales we use in terms of understanding the people's issue. So in terms of actually testing that, we use this research. And fourthly, we try to studies to list the efficacy of specific technique of offering services. For an example, when we are using trying to address the issue of an individual, we use the casework method. So when we are using the casework method, we try to see how best we can make use of this method. We try to see in a step-by-step process how we can undertake this research. And finally, in terms of studies, the methodologies of social work. So when we are trying to undertake social work research, we use various methodologies. So we try to see how best or which methodology will be more apt in terms of undertaking this research. And next, when we see in terms of the objectives of social work research tries to find the answers to the questions which is being raised, especially during the intervention time or during in terms of the treatment. And secondly, it tries to provide knowledge about the inventions or the treatment that help to hinder the attainment of the social work goals. Usually, whenever we are trying to carry out any intervention, there will be a lot of actually hindrances will be there. And the purpose of the social work research is that to understand actually what are the factors which hinders the intervention process. So once we able to understand the process which hinders, we could easily able to remove that actually hindrances, and we could be able to do a better intervention which will be really helpful for the people at large. And
Next objective is that to help in search of answers to problems or difficulties faced by the social work practitioners. So many of the practitioners, when they are going to the field, whether when they are working with the individuals or groups or in terms of the communities, they face actually various problems. And to address that problem becomes very prerequisite, otherwise they could not able to do a very productive work. So social work research tries to provide some kind of an solution to address those problems. And finally, to help in building the knowledge base of social work theory and practice. Social work, this is one of the very lagging area in social work. Social work majorly tries to give lot of emphasis on the practice. And when it comes to the theory, especially in the Indian context, it is very much lagging. So the social work research objective is to create more and more research, as well as in terms of making that research converting into theory and put it into practice. And next is the nature of social work research. It primarily deals with the problem faced by the professional social workers, social work agency and the community. So when we are trying to see, usually the social workers, there are facing lot of problems, and the problems either it could be coming from the actually agency side or it could be coming from the community end. And secondly, the social work research mostly draws its inferences through the inductive reasoning. Mostly the science, the natural science research, it is actually a deductive method where they will be having an existing theory. Based on the theory, they will try to test. But whereas in case of social work, it is an inductive method where we go to the community or we go to the natural setting where we try to understand what is the social phenomena which exist. And from that actually whether we could be able to identify any trends or patterns, from that we try to create a theory. Usually the social work is an inductive method wherein we could be able to create theories through observations, through interaction with people and other modems. And the substantive part of social work research practice is concerned with the micro level practices. So when we are going to the field, usually we try to interact with the individual groups and community, and we try to do at a micro level. Usually the social work research draws its inferences from the micro level and then it take it to the actually the macro level for the policy making. And thirdly, when we are trying to, fourthly, when we are trying to understand, the social work research lays a special emphasis on evaluation. It is called the evaluative research focus on the impact of effort, efficacy and effectiveness. So most of the social work research tries to emphasize on the intervention either through the various programs which they carry out. So when they are doing the programs, the emphasis is that to see whether the program is effective, whether the program, how we can improve the effectiveness of the program, how we can better make use of the program. So usually we carry out lot of actually evaluation study. That's why social work research is also called as evaluation research. Next, the scope of the social work research. So when we are trying to understand the scope of the research, the first one is the transforming the hypothetical and assumptive knowledge into a tested knowledge. So there are many assumptions that the social worker has in mind. So those assumptions will be tested in the field, and those tested things will be converted into actually a theory or a knowledge. It will be created, which will be further used by the other social workers. And the second actually scope is that concerned efforts to conceptually articulate and validate the concepts and theory. So there are various concepts, majorly social work draws from the Western, and those concepts have not been tested in the Indian context. And this social work research gives a scope for the practitioners in terms of testing those concepts and making or putting that into use. And thirdly, when we are trying to see, evolve a systematic theory and validate concepts relevant to the social work process. And fourthly, to know the efficacy of different methods of social work as to search for alternative interventions. As I already pointed out, social work, there are various methods, both primary and secondary methods are there. And these methods will be tested in the field, and we will try to see actually any alternative intervention process or alternative interventions can be provided. And identification of social work needs and resources and evaluation of programs and services. So another important scope of social work research is that various programs is being conducted either by the non-governmental organization or by the government.
those programs needs certain evaluation in terms of seeing whether they could be able to achieve the set target or not. So those process can be carried out very effectively using the social work research. And finally, the scope is that to identify the problems faced by the social worker and the agencies. So the social workers are facing a lot of problem, either in terms of either it could be a personal problem or when they are dealing with the individuals, groups and communities. And social worker also, when they are working as part of an organization or an NGO, the agency also encounter a lot of problem. Social work research helps in terms of addressing those problems either at the individual level or at the group level or in terms of the social work organization. Next, we will try to see the social work research process. In general, the social science tries to follow a research process where in that research process usually we tries to look into this problem, and then as a second stage they try to create an hypothesis, and from the hypothesis they try to actually develop certain research methods, and then they do the data collection, and based on the data collection they will do the research analysis, and then they will go for the presentation of the findings. Whereas in case of the social work research, the primary focus is not to study the problem. The primary focus is to prepare an intervention plan and provide certain intervention and try to address the problem and create an a model which can be used in a similar setting which will be helpful for the people. So though we start with in terms of identifying of the problem, and then we try to move as a second stage in terms of the need assessment. What is the need of the people? What are the problems of the people? What they immediately wanted to be addressed? Once we identify the need, then immediately we are moving into the selection of social work research design. Though in the conventional method there are various research designs which are available, either it could be exploratory, explanatory, or in terms of other causal methods, in terms of various designs available. Social work as its own research method, either it could be a single subject research design or in terms of a group design which is available. So we try to see which research design will be more apt. And once we finalize the research design, we do a pre-testing of the people in terms of understanding what is the current level of the people or current situation. And then based on the need assessment, we try to develop a module in terms of providing certain intervention. Then we will try to implement or strategize in terms of providing those intervention. Once the intervention phase is over, then we will move into the next stage in terms of doing an post-assessment. The post-assessment helps in terms of identifying how effective is our intervention. And once the intervention is done and the post-assessment is done, then we will try to see what is the, we will evaluate the study, and then we will come to a closure in terms of what is the outcome of the research. And next, when we are moving in terms of understanding how we can integrate the research and the practice. So till now we are discussing upon the social work research. Ultimate purpose of social work research is not to just stop at the level of research. We wanted to bring the findings of the research into practice. So that's why when we see in terms of the social work pedagogy, almost 60% it tries to look into the theoretical aspect and 40% is the practicum aspect. So the major emphasis of social work research is to bring the research into practice. So we adopt certain method in terms of doing it in a very, very systematic way. The first and the foremost method which we use is the fieldwork training. As part of the curriculum, the students will be sent to the field every 2 days in a week. And during the fieldwork, we try to emphasize the student that they need to practice the social work in the field. And secondly, we try to help the students in terms of developing certain research. As part of the curriculum, if you see, every student has to undertake a dissertation. In the dissertation, either they will be trying to deal with the issues of an individual, groups or community. And in the dissertation, we tries to emphasize the student to undertake the social work research method, study, and then try to come out with the finding. And thirdly, we have an interaction with the students in terms of both individual level as well as at the group level.
In the individual interaction, it is called as actually individual conference, wherein we tries to understand actually the student's problem, what kind of actually problem they are facing, how they are trying to address the issues. And when it comes to the group conferences, each problem will be addressed by an individual students in a different way. And this learning can be taken to the other member who is also part of actually doing certain practice in a different setting. So in that way, the group conferences will be very helpful. Through this actually we are trying to decimate the process actually from one student's learning to the other students. And nextly, the fieldwork seminars. So during the seminars, again, it is usually we conduct at the end of every semester, wherein we try to bring in all the students from the field to share their actually the feedbacks. So this is a conference which really helps in terms of sharing the experiences from the field, both in terms of the challenges that they faced and how they have overcome with those actually problems. And finally, the submission of the report. So all the experiments and all the interventions which they carried out in the field will be captured and will be submit as a report, because that becomes a written document so that the students, those who come in the future, they can refer and they can learn from that. Next, we will see the steps of social work research. Though we are trying to do the social work research, we try to follow in a very systematic way so that it can be, we can call it a scientific process, wherein we try to address many of the hindrances or the problems which the students encountered will be addressed. The first and the foremost thing that we do is the problem assessment. In the problem assessment and formulation, the formulation, we try to see what is the problem which they are identifying, and then we next move into the formulation of the intervention strategies. Once they identify the problem, they try to formulate a strategy to address it. And thirdly, they have to develop an appropriate research design, and fourthly, they have to implement it. Once the research design is developed, then they have to implement the intervention process, and then they have to collect the data to see how effective is their intervention, and then they will draw conclusion, and then the evaluation will be done and a closure will be brought upon. And next is the need-based actually research methodology. So almost all the social sciences have their own actually research methodology, though we could able to see certain parallels, but depending upon the discipline, we use a specific method to undertake. Similarly, in case of social work research also, we have an actually a research method which we adopt. Either it could be an actually a deductive or inductive model, or we majorly depend upon the mixed method, wherein both qualitative and quantitative will be used. When it comes to the design, usually we use the quasi-experimental research design or action research. When it comes to the sampling, usually we use the non-probability sampling, and then we use the actually single system research design. And mostly when it comes to the analysis, we use the multivariate non-parametric analysis. Since there are various factors involved, we use the multivariate parametric analysis. And these are the references that we have used for this particular actually presentation. So you can actually refer those books. So it will give you a deeper insight with related to the social work research. I thank you all for listening this session, and we will actually meet in the next session for a detailed discussion on the social work research. Thank you all. Friends,